Hello and welcome to today's discussion. Today we will discuss about CPET Previous Year Questions. आमे आज रो डिस्कशन रे CPET रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को आलोचना करिबा. Let's start with this question. Epithelial tissues are always found immediately adjacent to connective tissues because they lack blood vessels. They can make the exchanges with blood critical for their survival and function because they have no extracellular matrix, both A and B. So before answering this question, हमको बुझिबा को हबो जे एपिथेलियल टिश्यू काहे कि सदा बेले कनेक्टिव टिश्यू रो पाखे पाखे थाए. ए क्वेश्चन रो आंसर करबा को हेले हमको एपिथेलियल टिश्यू रो प्रॉपर्टी विषय जानिया पई हबो. हमें जानि छे जे एपिथेलियल टिश्यू रे कोनसी प्रकार ब्लड सप्लाई न थाए. एपिथेलियल सेल्स डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स. तो ताको जहां भी रिक्वायरमेंट अछि न्यूट्रिएंट्स रहेला, वेस्ट रिमूवल रहेला, अदर फैक्टर्स रहेला, हार्मोन्स रहेला, जहां भी फैक्टर्स ताको एसेंशियल अछि इसमें केमिति आसीबो. तेनु करी कनेक्टिव टिश्यू जोटा की ऑलरेडी ब्लड वेसल सब कैरी करिछि ताको पाखरे रहिले ता एडजेसेंट रे रहिले सब किछ न्यूट्रिएंट्स ताको इजीली पहुंची परिबो. सो लैक ब्लड वेसल्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैचमेंट एपिथेलियल जो भी थिबो से कनेक्टिव टिश्यू को बेसल मेम्ब्रेन बा बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा ही अटैच होता है. नेक्स्ट ला मेटाबॉलिक एक्सचेंज. जेहेतु निजर एपिथेलियल टिश्यू ब्लड वेसल्स नाही तेनु कर जदी से कनेक्टिव टिश्यू एडजेसेंट रे रहिबो ताले इजीली ब्लड रे आसुथिबा सब रिसोर्सेस गुडा को आउ लाइक न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड आल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट ए सब जक जिंस को कैरी आउट करिया पई हेले एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू रो पाखरे रहिबार अछि. The option A is correct. Then let's look at option B. It can make the exchanges with blood that is critical for survival and function. B ta bhi correct achi. Option C, it has no extracellular matrix. That is incorrect. So option D will be correct answer and final answer because both A and B are correct. So here our final answer will be option D, which is both A and B option are correct. So let's move to next question. As you can see in this question, it has been asked a series of functional changes that causes a sperm's tail to beat more vigorously and prepare its plasma membrane to fuse with oocyte's plasma membrane is called dash. Chaita option available achi. 4 options are available: fertilization, implantation, capacitation and syngamy. The question de पचारिछि स्पर्म रो टेल को अधिका स्पीड रे मूव हेबा पई, अधिका फास्ट बीट करिबा पई आ oocyte रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित फ्यूज हेबा पई स्पर्म रो मेम्ब्रेन रे एमति कोन चेंजेस हुए बा से प्रोसेस टा कोन कहवा जाय जो द्वारा कि स्पर्म रो चेंजेस हेबा द्वारा स्पर्म रो मेम्ब्रेन रे चेंजेस हुए आ स्पर्म बहुत फास्ट मूव करिबा को लागे. तो फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हबनी बिकॉज़ fertilization is the fusion of male and female gamete. Next la implantation. Implantation रे कोन हुए हमर एम्ब्रियो टा यूट्राइन वॉल रे एम्बेड हेता है. That is also incorrect. Next la syngamy. Syngamy is the fusion of male and female pronucleus. That is also incorrect. The last option which is correct is capacitation. So capacitation हला से प्रोसेस जो प्रोसेस रे स्पर्म रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे एमिति चेंजेस हुए जादरा कि स्पर्म बहुत फास्ट मूव करबा को लागे आ से चेंजेस गुडा ताको हेल्प करे फ्यूचर रे oocyte पाखरे पहुंचिले ता प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित फ्यूज हेबा पई. त कोठी हे थाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मोर स्पेसिफिकली इन द फैलोपियन ट्यूब. ए प्रोसेस रे हे थाय कोन एक्जेक्टली ना स्पर्म रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे थिबा कोलेस्ट्रॉल आ अन्य किछ सरफेस प्रोटीन गुडा को रिमूव होई थांती जा द्वारा कि हमर जो स्पर्म हे थाय से हाइपर एक्टिवेशन हे थाय बा अधिक मोटिलिटी गेन करि थाय एंड फ्यूचर रे ताको oocyte रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे फ्यूज हेबा पई मध्ये हेल्प करथाय. ए चेंजेस गुडा को हुए कोलेस्ट्रॉल रिमूव हेबा, सरफेस प्रोटीन रिमूव होबा सहित तार कैल्शियम परमेबिलिटी भी चेंज हे थाय. माने स्पर्म इज अ सेल, ए सेल भीतर को केतिकी कैल्शियम आयन पसी पारिबो
सेटा भी चेंज होता है माने इट इज मोर परमिएबल हो जाए इजीली कैल्शियम आयन गुडा फॉर्म भीतर को एंट्री करि परिबे जहा द्वारा कि फ्यूचर रे ताको आक्रोजोमाल रिएक्शन स्पर्म रे गोटे रिएक्शन हुए आक्रोजोमाल रिएक्शन जोटा कि ताको जोना पेलुसिडा कहार उ साइड रे जोना पेलुसिडा क्रॉस करिया पई हेले आक्रोजोम रिएक्शन बहुत एसेंशियल आक्रोजोम रिएक्शन है पई कैल्शियम आयन रो कंसंट्रेशन इनसाइड द स्पर्म शुड बी हाई और सेटा हाई है पई हेले द स्पर्म शुड बी मोर परमिएबल टू कैल्शियम आयन और से परमिएबिलिटी बढ़ाया पई के हेल्प करथाय एक कैपेसिटेशन प्रोसेस जोटा कि फीमेल रो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भीतर हेथाय. So the final answer for this question is C, capacitation. Let's move to next question. The question is asking, at gap junctions, neighboring cells are connected by membrane proteins called dash. हमें जानिचे जे cell junctions माने दुईटी cell किंबा cell और ECM को connect करी थांती. एठी पचारची specifically gap junction विषय रे. तो gap junction दुईटी cell को connect करी थाए. gap junction जो protein रो help रे दिरा cell को connect करी थाए ताको कौन कहा जाए? जेमिति कि मैं देखि पारथबा एटा गोटे गैप जंक्शन रो कॉम्प्लेक्स टे हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स 5 हेक्सामेरिक 6 टा यूनिट अछि एंड दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कनेक्शन. द कनेक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सेल ए एंड सेल बी दे कम टुगेदर टू फॉर्म गैप जंक्शन. बट यांकर द इंडिविजुअल यूनिट को देखिबा बा इंडिविजुअल प्रोटीन जो थ्रू ए एंटायर कॉम्प्लेक्स तयारी दैट इज कनेक्सिन. सो 6 टा कनेक्सिन मिसी की गोटे सेल रो कनेक्शन तयारी हुए. The correct answer will be connexin. Next question is, approximately how long after fertilization does implantation of embryo usually occur? Question रे पचारी जी fertilization माने sperm और egg रो fusion हेबारो केते घंटा परे embryo टा uterus रे embed हेइथाय बा implantation हेइथाय. Options अछि 3 weeks, about 6 days, 1 day and about 3 days. So let's look at the entire timeline after fertilization to implantation. The day of fertilization will be marked as day 0. Then the next day the embryo is at a 2-cell stage. On day 2 embryo has 4-cell stage. Day 3 it is at 8-cell stage or also called as morula. On day 4 it is at the early blastocyst stage. Day 5 again fully formed blastocyst with trophoblast and inner cell mass. On the day 6 to 10 implantation takes place. So if you look at the implantation which takes place around 6 to 10th day, what is implantation? During implantation the blast of the embryo at a definite stage attached to the endometrium. Endometrium is the lining of the uterus and gradually burrows in. माने से भितरे से wall of the endometrium रे से धसी धसी की लागी जाए. And the cells of the trophoblast, ये जो सेल गुड़ा को अच्छी पर्पल कलर सेल गुड़ा को अच्छी ट्रोफोब्लास्ट रो invade the uterine lining. जिम्ते अपना देखि परथे पर्पल सेल गुड़ा को सबु यूट्राइन वाल भितर को धसी धसी इन्वेड करिसंती जो गुड़ा की परवर्ती अवस्था रे प्लासेंटा तयारी करिवे. इम्प्लांटेशन रो अगेन चारिटा बा तीनटा स्टेज अछि स्टेप्स. फर्स्ट हैला अपोजिशन माने से आसी की पाखरे पाखा पाखी रहिबो यूट्राइन मेम्ब्रेन पाखरे. सेकेंड हैला जोडा कि 6-7 दिन भितर हुए. नेक्स्ट ला इन्वाजन. इन्वाजन रे कोन हुए ना ट्रोफोब्लास्ट सेल गुडा को यूट्राइन टिश्यू भितर को एंट्री करंती जोडा कि डे 7 टू 9 रे हुए. नेक्स्ट ला कंप्लीट इम्प्लांटेशन जोडा कि 10 रु 12 दिन भितर हुए. जति हमें देखिबा हमर ऑप्शंस को अगेन रिविजिट करिबा. 3 weeks माने 21 days. This is incorrect. 6 days is the correct answer. 1 day obviously not. About 3 days रे भी एना थाय. 6 रु 10 दिन भितरे. थैंक यू. ठीक भाबरे ए प्रीवियस क्वेश्चन गुडा को बुझी पारिले त्यार सॉल्यूशन डिस्कशन ता भलो लागिला ताहले आपण कमेंट रे जणांतु ताकि मु मोर सच क्वेश्चंस रो सॉल्यूशन नै कि आसी जोटा कि आपने यूजफुल हो. थैंक यू.